Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. In what could be termed as a gang war between two Kuki militant groups, 4 persons were shot at on Monday. A 60-year-old woman who was working at a nearby field also died in the crossfiring. Rajya Sabha MP Manan Kumar Mishra, who is a member of the BJP fact-finding team on the Kolkata alleged gang rape of a law student, said that the main accused has relations with the TMC, is a history cheater and has been arrested 4 times previously. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit to Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil and Namibia from July 8 onwards, Secretary P. Kumaran said. In a tragic incident this morning, at least 8 workers are feared killed and 26 others injured in a massive reactor blast at an industrial unit at Pasha Mailaram near Hyderabad in Telangana. Now for the news in detail. In what could be described as a gang war between two Kuki militant groups, 4 persons were shot dead on Monday. A 60-year-old woman who was working at a nearby field also died in the crossfiring. Quoting locals, an official said, underquote, the victims were traveling in a 4-wheeler car when the suspected militants ambushed them at around 2 p.m., unquote. Preliminary reports indicated they were shot from a point-blank range. United Kuki National Army, in a written statement, has claimed responsibility of the incident, saying, underquote, Tekong and his friends were punished for killing 2 people, unquote. Dhabi Haukib is a commander of Kuki National Army, KNA. Several firearm cases were recovered by locals from the incident site. KNA is under suspension of operations with the Government of India. However, the UKNA is not part of the SU agreement that some other Kuki groups have with the Indian government. This means they are not bounded by the terms of the agreement, which typically involves a ceasefire and negotiations. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil and Namibia from July 8 onwards. Informing on the same, Secretary East P. Kumaran said the BRICS Summit segment of the Prime Minister's visit will be on 6 to 7 July and the state visit segment will be on 8 July. During the state visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva. Bilateral agreements will be signed on renewable energy, agricultural research and security operation. Prime Minister Modi is visiting Argentina on 4th of July. On an official visit, both leaders will hold talks on economic and trade interests to further strengthen bilateral relations. Secretary Yah just mentioned about the BRICS portion of the visit to Brazil. I will try and add on to that by talking about the bilateral segment of the visit, which will be on, I'll start with Brazil, which will be on 8th of July. 6th and 7th will be the Rio segment for the BRICS summit. As you know, Prime Minister has earlier visited Brazil on 3 occasions. The first in July 2014, followed by another visit in 2019 to attend the BRICS summit, and in November last year to attend the G20 summit in Rio de Janeiro. During the state visit to Brasilia, Prime Minister is scheduled to hold bilateral talks with President Lula. The program basically includes a ceremonial welcome on arrival, followed by a restricted meeting and a delegation level format talks, culminating with a lunch hosted by President Lula for Prime Minister Modi. The state visit will provide an opportunity to review the entire gamut of our partnership, including trade and investments, oil and gas, renewable energy, mining and critical minerals, defense and security, agriculture and livestock, healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, DPI, and also sports and people-to-people relations in general. Both leaders would also be discussing during their talks global issues of mutual interest.
The visit will be a significant milestone in the India-Brazil strategic partnership and is envisaged to add renewed momentum to the strategic partnership which we agreed to in 2006. On the trade front, India's trade with Brazil is the largest compared to any other country in Latin America. It had reached 16.6 billion in 2022-23, and following the drop in oil and gas prices, it is now around 12.2 billion, with India enjoying a trade surplus as we export goods worth $6.7 billion to Brazil and import goods worth $5.4 billion. Both leaders have set a bilateral trade target of 20 billion during their last meeting in November 2024. During their forthcoming meeting in Brasilia, the two leaders are expected to discuss ways to strengthen and diversify bilateral trade, including through expansion of the India-Mercosur PTA, as Brazil will be holding the chairship of Mercosur from 1st July 2025. India and Brazil are strong proponents of Global South cooperation. We also collaborate closely across all global platforms, of which we both are members, including BRICS, G20, IBSA, and of course the United Nations. We also collaborate closely as members of G4, seeking comprehensive reform of the UN Security Council. We are looking at a few important bilateral MOUs and agreements, especially in renewable energy, agricultural research, and security cooperation. We'll give you more details during the course of the visit. Let me quickly move to the Argentina part. Prime Minister Shri Narendra Modi is visiting Argentina on 4th and 5th July on an official visit. PM has traveled earlier to Argentina for a G20 meeting in 2018, but this will be the first bilateral visit by an Indian PM in the last 57 years and is therefore historic. As part of the program, the Prime Minister starts by paying respects at the statue of General Jose de San Martin, Argentina's revered freedom fighter and national hero. The Prime Minister will be accorded a ceremonial welcome. He'll have delegation level talks, and it will be followed by a lunch hosted by President Milei for the PM. As you're all aware, Argentina is a strategic partner of India since 2019, and the two countries celebrated 75 years of diplomatic relations last year. The Prime Minister's visit to Argentina comes at a particularly significant time as Argentina is undertaking major economic reforms, somewhat similar to those India went through in the past. Both leaders will, of course, discuss subjects of economic and trade interest to further strengthen bilateral relations. India's advancements in defense manufacturing, in space sector, in new areas such as information technology and DPI can offer valuable expertise, and we can share experiences with Argentina. Our expertise in telemedicine and digital healthcare solutions are also on offer for Argentina in expanding access to medical services and improving overall quality and cost-effective healthcare delivery. Argentina holds the world's second largest shale gas reserves and the fourth largest shale oil reserves, along with, of course, substantial conventional oil and gas deposits, making it a potentially important energy partner for India in the future. Argentina's rich reserves of critical minerals such as lithium, copper, and other rare earth elements complement India's growing need for secure and sustainable supplies to these elements for its clean energy transition and industrial growth. India's public sector car bill has already won a few concessions in Argentina since 2024. Our leaders will be discussing more on this subject. The visit is expected to further strengthen the strategic partnership and open new avenues of cooperation. These include trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security, infrastructure,
mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT, digital innovation, disaster management, S&T, education, and people-to-people linkages. We'll be right back after a short break, so stay tuned. পোহৰ আৰু শব্দ এই পৃথিৱীখনক জনাৰ আৰু বুজি পোৱাৰ দুটা প্ৰধান উপাদান পোহৰ আৰু শব্দৰে আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক জানো বুজো আমাৰ পৰিচয় গঢ়ো যদি পোহৰ আৰু শব্দবোৰ নোহোৱা হৈ যায় তেওঁলোকৰ জীৱন অৰ্থবহ কৰি তুলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বৰ্তমান তেখেতৰ প্ৰত্যক্ষ তত্ত্বাৱধানত অসম চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় সাহায্যৰে চলি থকা মুকবধিৰ শিশুৰ বাবে গুৱাহাটীস্থিত বিডিএছ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যোৰহাট অন্ধ বিদ্যালয় গুৱাহাটী অন্ধ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ধৰি চৰকাৰী সাহায্যত চলি থকা আৰু বহুতো প্ৰতিষ্ঠান এই বিদ্যালয়খন 1949 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু সমগ্ৰ আমাৰ যি ফান্ড আহে বা আমাৰ যিখিনি সহায় সহযোগ লাগে এটো আমি সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ পৰা অসমৰ পৰা আমি পাওঁ আমাৰ যোৱাবাৰ এছএছএলসি এক্সামত প্ৰায় 100% বুলি ক'ব পাৰি উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলতো 100% বুলি ক'ব পাৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মানৱীয় দায়িত্ববোধৰ বাবে শব্দ আৰু পোহৰৰ চাক চমকতাত দিশহাৰা হ'ব খোজা এই পোহৰহীন বাকহীন শিশুবোৰৰ জীৱনলৈ আহিছে জীৱন জোখাৰ উৎসাহ আস্থা আৰু এয়াই হৈছে ভৱিষ্যত অসমৰ সবল ভেটি অথনে পা কৈ আছে পঢ়া টেবুলত বহিবলৈ নাই খবৰ নাই হেৰো দিনৰ দিনডাল হে মোবাইলডাল টিপিকি থাকিলে পঢ়া পাতি কিবা হ'বনে এনেকে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকিলে হ'ব নেকি কিয়নো ইমান গালি পাৰি আছে ওটাই নোৱাৰিছ আৰু বুইছনে অকনো কাণ্ড জ্ঞান নাই ল'ৰাটোৰ তাক খং কৰি গালি পাৰি থাকিলে জানো কিবা সমাধান ওলাব সি গান গাই ভাল নাপায় জানো এটা কাম নকৰা কিয় কি অসমৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্টে 15 দিনীয়া এটা কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে তাতে নৃত্য গীত অভিনয় এই সকলোবোৰ প্ৰশিক্ষণ দিব নহয় তুমি তাক তালুকে পঠিয়াই থাকিলে হয় নেকি বৰ ভাল কথা দেখো হয় কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আছামে প্ৰতিখন জিলাতে অহা জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে নৃত্য গীত আৰু নাটৰ কৰ্মশালা আপোনাৰ শিশুটিৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে এই কৰ্মশালাত যোগদান কৰক সম্পূৰ্ণ বিনামূল্যে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সবল নেতৃত্ব আৰু মাৰ্গদৰ্শনত ৰাজ্যখনৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে এয়া হ'ব প্ৰতিভা বিকাশৰ কমাৰশাল সবিশেষ তথ্যৰ বাবে সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ অধীনস্থ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত থকা কাৰ্যালয়সমূহত বিভিন্ন জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অথবা সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
Welcome back. Moving on to the next news. Transport Minister of Uttar Pradesh, Daya Shankar Singh, on the 28th of June celebrated his birthday in a unique way. Daya Shankar Singh celebrated his day with his workers by cutting a cake late at night. Clothes, fruits, sweets and other materials were distributed to the elderly people at old age home as well as children and women in girls' home. Later, Havan Puja and Sundargand were recited at various places. Workers also distributed fruits to patients in the hospitals. BJP worker Arun Singh and Prakash Singh shared their enthusiasm on this day. मेरा नाम प्रकाश सिंह है, बलिया परिखरा के निवासी हूँ। जी प्रकाश जी, आज इसकी जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाई जा रही है? कौन है इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है? ये हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ये दया शंकर सिंह जी हैं। वो बलिया के लिए जन सेवक, जन कल्याण योजनाएं बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जिनके लिए सभी लोग आधी रात को भी लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे उनके जन्मदिन पे कितनी खुशी है और क्या उनको कहना चाहेंगे? उनके स्वास्थ्य के लिए, उनका दीर्घायु का हम लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऊंचे आ रहे हैं। और उनके जन्मदिन के अवसर पे और अपने जन्मदिन के अवसर पे क्या कहेंगे आप? माननीय परिवहन मंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग ने हॉस्पिटल मरीजों को फल वितरण किए, जगह जगह मंदिरों पे सुंदर पाठ हम लोग बैठाए हैं और नारायणी कार्यालय से हर कीर्तन भी बैठा हुआ है। और इसके साथ ये चाहेंगे कि माननीय परिवहन मंत्री जी का उम्र ज़्यादा हो कि उससे विकास कर सके और विकास कर रहे हैं, प्रदेश देश में नाम कर सकें। बात कर ले उनके जन्मदिन के अवसर पे विकास को लेकर, तो किस तरीके से अब तक विकास रहा और आगे की क्या आप कामना कर रहे हैं? जिस तरह अभी 3 साल है बलिया में, आप देख ही रहे हैं कि विकास बहुत ही हुआ है और आने वाले समय में काफ़ी विकास होगा। बलिया को पहचानना मजबूरी हो जाएगा कि यही बलिया पहले था। आज की डेट में बलिया काफ़ी विकास कर चुका। इसी के साथ बलेश्वर जी में हम लोग भ्रमण भी किए। कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि हमारा कार्यालय है जो मेन हमारे यहाँ से विधानसभा संचालित होता है, हमारा जो मुख्य कार्यालय है और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अपने कार्यकर्ता गणों द्वारा आज जो है यहाँ जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया गया था। मुझे भी लोगों ने कहा था कि आप आइएगा और मैं आया। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मैं बस यही कह सकता हूँ कि उनके जो मेरे प्रति प्यार है, जो लोग हमारे साथ जो मुझे सम्मान करते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उन लोगों के प्यार, उनके सम्मान को पाई ब्याज सहित उनको वापस करूँगा और अपने परिश्रम से पार्टी के नेतृत्व के सामने जो भी बलिया के विकास के संबंध में बात होगी या हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से संबंधित बात होगी, उसको जो अवश्य जो है हम चाहेंगे कि कार्यकर्ताओं को अनुरूप कार्य हो। जिस तरह से आपके दीदार के लिए लोग सुबह से ही आपका इंतजार कर रहे थे और जिस तरह से बेसब्री के बाद आप आए हैं, उसके बाद एक के बाद एक लोग टूट पड़े हैं आपके ऊपर। आज कार्यक्रम भी था, आज जो है युवा मोर्चा के द्वारा युवा संसद का कार्यक्रम था गोरखपुर में। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम लगा था, वहाँ गए थे। फिर जवरिया हमारे प्रभार जनपद है, वहाँ गए, वहाँ से आने में देर हो गया थोड़ा, लेकिन कार्यकर्ताओं का प्रेम स्नेह इसी तरह मिलता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँ। मंत्री जी, क्या आज बलिया के लिए कुछ तोहफा भी रहे क्या आपके जन्मदिन को? देखिए, जो बलिया के लिए हम लोगों ने चुनाव में घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा था कि बलिया में हम यदि विधायक बनेंगे तो हमारी 16 सूत्री हमने एक जो पम्पलेट भी छपवाया था कि हम जब विधायक बनेंगे तो ये काम करेंगे। और आज भी मैं कहता हूँ कि वो 16 काम तो करूँगा ही करूँगा, उसके अतिरिक्त भी काम होगा और बहुत सारे काम हमारे आज धरातल पर दिख रहा है। और वो आप देखेंगे कि अभी 2 साल बचा हुआ है, 16 के 32 से ज़्यादा काम करके दिखाई देंगे। We'll take another short break, so stay tuned.